Hello dear students, welcome to the class of Health and Physical Education. Today's topic which we are having, that is related to games and sports. In that we are going to learn the major game, that is related to athletics. I have written here track event 1. That means today we are going to learn only a very small part of athletics. Okay, so let's start without wasting the time. So related to the history of athletics, so the term athletic is been derived from a Greek word athlon, which means a contest. Contest is right type of fight, okay, where the person used to compete, and the word athlete means a person. Athlon means the contest or any of the game or competition, and athlete means a person who used to participate in some of the sort of the contest involving physical activities where the person used to compete is considered as an athlon, and the person is considered as an athlete. So instead of athletics, the people of the ancient Greek used to call it track and field. They used to call it as a track and field event because there are the track events which are been related to running. There are the field events which are related to throwing, jumping. Clear? So there are, it has been considered a track and field event. In 12th century in England, the track and field was being named as an athletics. Track and field was being named as athletics. Nowadays, the athletic is being considered a major sports of the world level. Until 1928, the women were not being allowed to participate in the athletics in Olympics. International Amateur Athletic Federation was constituted in 1913. It is a world level body which controls all activities related to athletics. The governing body which used to control the athletics. Okay, so here when we are talking about the athletic, it used to, this athletic has been came from the ancient time period. Okay, that was the games were being held in the ancient time period in Greece actually. That's why it is been given here. Related to Greece, the people of the ancient Greek used to call as a track and field event. So it used to work since 776 BC. Now there are the two types of events which are included in the athletics. One is track event and another is field event. So track event includes like sprint race, that is 100 meter, 200 meter, 400 meter. Sprint race means small distance race. Middle distance race consists of 800 meter and 1500 meter, and long distance race consists of 3000, 5000 meters and 10,000 meters, as well as marathon, that is 42 kilometers, 42.195 kilometers, 20 kilometers walk and 50 kilometers of walk, as well as a half marathon, clear, that is of 21 kilometers. Then we are having track events also consist of hurdles like 100 meters, 110 meters and 400 meter hurdles. Relay race consists of 4 into 100 and 4 into 400. And we are having steeplechase, that is of 3000 meter. In the steeplechase also there are the hurdles. Okay, there are the steeplechase where the person used to have the pit of the water, filled with pit of the water, and they used to jump over that. So that is of 3000 meter steeplechase. Now let us see the ground. Okay, the track, the standard track of 400 meter, you can find out the lanes, internal areas. Okay, here you can see the pole vault area. Then we are having shot put and hammer throw area, you can see here. Okay, this area is related to shot put and hammer throw. These are the internal marking which are being done. Okay, these events are being considered as a field event. High jump, javelin throw is a field event. Discus throw is also a field event. Triple jump and broad jump is also a field event. Now the track events, you can see here the starting of 200 meter, 3000 and 5000 meter. Okay, that is the starting of 200 meter. Actually the end or the finishing line, you can see here it has been given the finishing line. Here there is a finishing line. The start of 400 meter, 800 meter and 10,000 meter is done from this. Here you can find out these markings. Okay, this marking you can find out that are considered as stagger.
आप लोगों ने देखा होगा हर एक लेन, सेकेंड लेन में देखो आप लाइन, स्मॉल लाइन यू कैन सी इन द सेकेंड लेन, इन थर्ड lane also you can see a line, okay, here you can see a line, then in fourth lane also you can see a line, fifth lane also there is a line. So these are the starting points, these are the starting point for 400 meter when the stagger is been given, it has been considered stagger. And here the stagger for the 200 meter is been given, here you can see the small lines, okay, stagger for 200 meters, clear, the stagger is been given. That means the athlete used to run from the starting point of the athlete will be given, and the second line will be front, third line it will be ahead, okay, and the fourth line is more ahead than the third one, fifth line is ahead again of the fourth one. So these are the types you can see here. Then for the hurdles, this is a track event, so here you can find out 100 meter start is been given from this line, this line is 100 meter start, as well as 110 meters you can see the hurdle, okay, it has been given marked as 110 meter, where you can find out the 100 meter finishing at this area. This is the line where the 100 meter finishes, clear. Okay, now we are going to learn related to track marking, that is straight, that is marked as an ST, curve is marked as an C, RR is being considered running radius, and MR is being considered marking radius. Now running radius अलग है और marking radius अलग है. Why they are being different? Because whenever the marking is being done of the track, it is being done accordingly, okay, and here it is been considered that when the athlete used to run, they do not run on the marking radius, that means that they do not run on the line, they run in the lane. वो क्या करते हैं, लाइन से थोड़ा हटकर भाग दौड़ते हैं, okay, that is in center of the line. So center, when we are talking about the center of the line, so that means that there is a distance, at least जो भी रनर है या जो भी एथलीट है वो क्या करता है 30 सेंटीमीटर वो क्या करता है, पहला ट्रैक जो है वो 30 सेंटीमीटर छोड़ के भागता है, वो कंसिडर करते हैं, ओके, दैट इज़ रनिंग रेडियस, दैट्स वाई इट इज़ बीन कंसिडर रनिंग रेडियस, ओके, एंड मार्किंग रेडियस जो है, जो ट्रैक मार्क करने के लिए जो यूज़ होता है, दैट इज़ कंसिडर मार्किंग रेडियस, ओके. देन what are the types of field events? You can see here the field events are being subdivided into two parts, that is throwing and jumping. Now in throwing, what are the events of throwing events that are considered field event, like shot put, discus throw, hammer throw and javelin throw, whereas the jumping event consists of broad jump, high jump, triple jump and pole vault, okay, it is pole vault. Then we are having the events decathlon, heptathlon for the men's and women's respectively are being included in athletics. Decathlon में, okay, 10 events are being included, okay, let us see here 100 meter broad jump, shot put, high jump, 400 meter, 110 meter hurdle, discus throw, pole vault, javelin throw and 1500 meter run. So decathlon event are being organized, कहीं कहीं पे डेकेथलॉन इवेंट ऑर्गेनाइज की जाती है, वेयर द 10 इवेंट्स आर बीन ऑर्गेनाइज एंड यू कैन सी द नेम्स ऑफ दिस 10 इवेंट्स आर बीन गिवन हियर. हेप्थलॉन, देयर आर द इवेंट्स लाइक 100 meter hurdles, broad jump, then shot put, high jump, 200 meter run, javelin throw and 800 meter. Heptathlon, it is how many events? 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Okay, heptathlon, that are 7 events. It consists of 7 events. So here it has been given the decathlon and heptathlon for men and women respectively. That means for men's there is decathlon and heptathlon is for the women's. Now what are the marking and the marking of the standard track? जब हम लोग standard track को mark करते हैं तब क्या ध्यान में रखना है? A standard track is been of 400 meter, consists of 2 straight and 2 curve. 2 straight होती हैं और 2 क्या होती है? 2 curve होती है. You can see here there are the 2 straights. These are being considered as straights. Okay, and there are the 2 curves. Okay, these are considered as in curves. Okay, there are the 2 curves are being given here. So 2 straight and 2 curves. So let us see here. Okay, from this formula we are going to learn. Okay, so standard track is equal to 2 straight plus 2 curve. 2 straight is equal to how much? 84 मीटर का straight होना चाहिए, और वो भी कितने? 2. 84 मीटर on one side, 84 मीटर on the another side. That is how much? 168 मीटर. 2 curves of 400 मीटर, that is 400 मीटर का ट्रैक होता है, उसमें से 168 माइनस कर दिया, that is how much? 232 meters. Now you can put into a formula to find out the radius, that how much the radius will be. Okay, so formula for the curve is
where there are two curves, so it has been written as 2 pi. If there was one curve, it was written as only pi, but as there is two curves, so it has been written as 2 pi, 2 pi r. Okay, now you are having what you are having. You are having the curves, that is 232 meters. Okay, so the formula will be how much? Radius find out करना है, तो radius is equal to c upon 2 pi. So 232 divided 2 pi is equal to, okay, when you used to put in a formula, you will get the curve radius how much? That is 36.90 meter radius. This is been considered as running radius. ये कौन सा रेडियस है? रनिंग रेडियस. एथलीट ये रनिंग रेडियस पे ही भागता है, तब जाके ये पूरा 400 मीटर का पूरा राउंड होगा. मार्किंग जब होगा तब क्या करेंगे? लेस 30 मीटर लेस करके बाद में मार्किंग किया जाता है. हाउ मच इट इज़ बीन मार्क्ड? लेस 30 मीटर. दैट साइड इज बीन रिटन एज 36.90 माइनस 30 सेंटीमीटर, बिकॉज इट इज़ बीन कंसिडर्ड. ये ध्यान रखा जाता है कि वेन एवर द एथलीट यूज टू रन, वो 0.30 मीटर और 30 सेंटीमीटर छोड़ के ही वो क्या करता है? भागता है. वो लाइन के ऊपर नहीं दौड़ेगा. दैट्स वाइट इज बीन कंसिडर्ड मार्किंग रेडियस विल बी 0.30 और 30 सेंटीमीटर लेस. फॉर द सेकेंड ट्रैक इट इज़ 20 सेंटीमीटर लेस. सेकेंड ट्रैक में पहले ट्रैक के लिए खाली 30 है, सेकेंड में 20 हो जाता है. नाउ द स्ट्रैगर इज बीन गिवन फॉर 200 एंड 400 मीटर. तो स्ट्रैगर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है W इंटू n माइनस 1 माइनस 10 सेंटीमीटर इंटू 2 पाई. तो विड्थ ऑफ द लेन, W इज़ व्हाट? विड्थ ऑफ द लेन. लेन का विड्थ कितना है? फॉर एग्जांपल कोई भी ट्रैक है तो ट्रैक का जो विड्थ होता है, द गैप बिटवीन द टू लाइन्स इज हाउ मच? 1.22 meters. How much? 1.22 meters. So that's why width will be 1.22. So width is written, width of the lane, n is number of the lane, and pi is 22/7. Okay. So here stagger for the 200 meter जब हम कैलकुलेट करेंगे वो फॉर्मूला में W इंटू n माइनस 1 माइनस 10. ओके, जब ये व्हेन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट एट दैट टाइम, फर्स्ट लेन का तो पहला जहाँ से मार्किंग है वहीं से स्टार्ट होगा. सेकेंड लेन का इट विल बी अहेड. हाउ मच अहेड? 3.52 मीटर्स अहेड फॉर 200 मीटर. हाँ, थर्ड लेन वाला जो है वो कहाँ खड़ा रहेगा? 7.35 मीटर अहेड. बिकॉज व्हेन द एथलीट यूज टू रन, ऑल एथलीट मस्ट बी हैविंग द सेम डिस्टेंस टू रन. सो दैट्स वाई द स्ट्रैगर इज बीन गिवन. तो उसी तरीके से 400 मीटर के लिए स्टैगर दिया गया है. 400 मीटर का इसका हाफ, एक्चुअली इट इज़ नॉट एग्जैक्ट हाफ, बट वी यूज टू कंसिडर हियर 7.04. जब आप लोग करेंगे तो क्या होगा? इसका हाफ करेंगे तो कितना होगा? 7.52. सो यू कैन सी इट विल बी द सेम ओनली. नाउ द ट्रैक इवेंट्स. ओके, स्टैगर आपको अगर फाइंड आउट कर सकते, यू कैन फाइंड द स्टैगर with a given formula like W into n minus 1 minus 10, okay, into pi. Now what is the short distance race? So short distance race is of 100 meter, 200 meter, 400 meter, 100 meter hurdle, 110 meter hurdle, 4 into 100, 400 meter hurdle, and 4 into 100 meter relay, and 4 into 400 meter relay. Clear? 4 into 100 meter relay means what happens that each and every athlete used to run only 100 meter. They used to pass the baton, and the baton another person used to go give to the third person, third used to give to the fourth one, but they are having each and every athlete, these 4 athletes used to run only 100 meter of run. Whereas into 4 into 400 meter run, that means that one athlete used to run how much distance? 400 meter of distance. So these are the short distance runs. Then middle race distance are being considered 800 meter and 1500 meter. Long distance run race is considered 3000, 5000, 10,000, 3000 triple chase, marathon race, and cross country and walking event like 50 kilometers, 42 kilometer marathon, okay, full marathon, and that all. Now what are the short distance or sprint race? Short distance race or sprint race. These races are short distance such as 100, 200, 400, 4 into 100 meter, and that's all, and so on. नाउ सिटिंग स्टार्ट इज़ यूजुअली टेकन बाय सच टाइप्स ऑफ रेस. जो शॉर्ट डिस्टेंस की रन होती है उसमें सिटिंग स्टार्ट से वो लोग करते हैं स्टार्ट. आर बीन टेकन इन सच टाइप्स ऑफ रेस. दिस स्टार्ट इज़ बीन कॉल्ड एज एन सिटिंग स्टार्ट और क्राउच स्टार्ट. जो बैठ के जो स्टार्ट लिया जाता है 100 मीटर को जो दिया जाता है और 200 या 400 के लिए, दैट इज़ बीन कंसिडर्ड क्राउच स्टार्ट और इट इज़ नोन एज एन सिटिंग स्टार्ट. स्टार्टिंग ब्लॉक इज़ बीन यूज्ड इन सच टाइप्स ऑफ रेस. You have seen that many of the athletes, they used to have a starting block so that they can place their foot and they can get the force, okay, with the help of that.
तो वो क्या है कि उनका जो पैर जो है वो पीछे वाला जो पैर है वो पीछे की तरफ वो सरकेगा नहीं, एंड दे कैन गेट अ वेरी गुड फोर्स टू गो फॉरवर्ड. ओके, सो ब्लॉक्स आर बीन यूज्ड, जिसको ब्लॉक्स बोला जाता है, विच हेल्प्स द एथलीट इन टेकिंग अ गुड स्टार्ट. द सिग्नल आर बीन गिवन बाय द स्टार्टर एट द टाइम ऑफ क्राउच स्टार्ट, सच एज ऑन योर मार्क, सेट एंड गो. गन शॉट से क्या होगा, गो. सो देर आर द 3 टाइप्स ऑफ क्राउच स्टार्ट. 3 तरीके के हैं. फर्स्ट वन इज बंच स्टार्ट और बुलेट स्टार्ट. तो व्हाट इज द बंच स्टार्ट? सो इन बंच स्टार्ट द डिस्टेंस बिटवीन द ब्लॉक्स शुड बी हाउ मच, 6 to 11 इंच. ये जो दो पैर के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ बीन गिवन. हाउ मच डिस्टेंस बिटवीन द 2 ब्लॉक्स. आगे वाला जो ब्लॉक होगा वो कहाँ पर होगा, 6 इंच. ओके, 6 to, एंड अनदर विल बी एट द 11 इंचेस. द फ्रंट ब्लॉक शुड बी ऑफ 12 इंचेस बिहाइंड द स्टार्टिंग लाइन. पहला जो ब्लॉक रखा जाएगा वो स्टार्टिंग लाइन से 12 इंचेस पीछे रहेगा. देन आफ्टरवर्ड्स 6 इंच से लेकर 11 इंच तक का सेकेंड ब्लॉक का डिस्टेंस रहेगा. ओके, बिहाइंड द स्टार्टिंग लाइन. एन एथलीट प्लेसेस बोथ हिज हैंड ऑन इन अ कप शेप और ऑन अ ब्रिज शेप behind the starting line. Here you can see with the help of the picture. Okay, so you can see the first one is bunch start. You can see the gap between both the legs. Okay, you can see here the gap between both the legs. The blocks are being placed. Okay, that bunch start is how much, 6 to 11, whereas medium start it is between 6. पहले पैर और दूसरे पैर के बीच में गैप कितना होना चाहिए, 16 इंच to 21. Okay, whereas in elongated means you can see the gap is more in elongated start. But the starting जो पहला जो starting line से जो पहला जो ब्लॉक रखा जाता है, पहले पैर का जो ब्लॉक है, that is 12 inches away, 12 inches away. Now here it has been given that both the hands should be okay. Both the hands should be apart as the shoulder of the athlete. At the signal of on your mark, the athlete comes on to the sitting position. At the signal of set, hips are being raised and slightly weight of the body comes forward. And at the signal of go, that is gunshot, the athlete starts running forward with full thrust, with full force. So generally, this start is beneficial for those athletes who are short stature. ये किसके लिए है, जो छोटी हाइट के जो होते हैं उनके लिए बंच स्टार्ट इज़ गुड. ओके, द मीडियम स्टार्ट के बारे में बात करते हैं. इन द मीडियम स्टार्ट द डिस्टेंस बिटवीन द 2 blocks is 16 to 21 inches. You can see here in the photo or with the picture. Most of these athletes prefer this type of start. ज़्यादातर एथलीट कौन सा स्टार्ट लेते हैं, मीडियम स्टार्ट यूज़ करते हैं. रेस्ट ऑफ द पोजीशन रिमेन्स सेम, बंच स्टार्ट के जैसा ही पोजीशन रहता है. द एथलीट हु हैव द एवरेज हाइट यूजुअली प्रीफर सच टाइप्स ऑफ स्टार्ट. Those who are having short heighted, they will start with have bunch start. Those who are having medium height, okay, they are having average height, they are using, and most of these players are using this medium start. And those who are having more heighted, like we are having Usain Bolt, the height of the Usain Bolt is more, so he is okay, he used to take the elongated type of start. So in the elongated start, the distance between the 2 blocks should be how much, 20 to 26 inches. It means the knee of the rear leg, rear that is back leg, and the heel of the front leg be in a line. ये जो है एक सिंगल लाइन में रहता है. Elongated start is usually preferred by the athlete who are tall and who have a powerful legs but hands slightly weak. जिसके legs powerful हैं but hands अगर इतने वो नहीं है तो क्या करेंगे, they used to take the elongated type of start. Now running actions are being given that after the signal of gunshot, the athlete take a thrust from the starting block and achieve the maximum speed in a minimum time. कम से कम टाइम में वो क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम स्पीड लेते हैं स्टार्टिंग में. To do so, the athlete should remain in a bending position while running forward. His stride should be not between his stride should not be lengthy but should be low and fast. Stride जो पहले जो स्टार्टिंग की है वो क्या होता है, वो लॉन्ग नहीं होती, बट शुड नॉट बी लेंदी, बट इट शुड बी लो एंड फास्ट. छोटी स्ट्राइड होगी बट फास्टर इट विल बी. देन एज आफ्टर द 30 मीटर जितना भी वो आगे भागेंगे, देन आफ्टर वो फुल स्पीड से लेते हैं. एट दैट टाइम द स्ट्राइड्स विल बिकम मोर एंड मोर लॉन्गर. द मिडल पोजिशन ऑफ द बॉडी शुड नॉट मेक मच मूवमेंट. द एथलीट शुड मेंटेन हिज स्पीड. ओके, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से दौड़ना है. द सेकेंड वी आर हैविंग दैट इज़ फिनिशिंग ऑफ द रेस. अब फिनिशिंग करने के जहाँ पे तरीके दे रखे हैं, दैट इज़ रन थ्रू,
लंचिंग एंड शोल्डर श्रग। पहला जो है वो रन थ्रू है, ओके। यहाँ पे क्या टॉर्सो, देन आफ्टर वी आर हैविंग लंजिंग। लंजिंग मीन्स चेस्ट का पोर्शन आगे की तरफ वो झुका देते हैं फिनिशिंग करने के टाइम पे। या शोल्डर श्रग, या एक हाथ अपना आगे करके वो लोग फिनिश करते हैं। सो यहाँ पर अलग अलग टेक्निक्स दे रखी है। सो यू कैन सी दैट रन थ्रू इज़ व्हाट द टेक्निक जनरली इज बीन एडोप्टेड बाय नोवाइस एथलीट। जो नए एथलीट होते हैं, न्यू एथलीट जो फर्स्ट टाइम भाग रहे, द बिगनर्स होते हैं, दोज हु आर नॉट हैविंग द नॉलेज दैट हाउ टू फिनिश, they used to finish in this way. So in this technique the finishing line is crossed with full speed by an athlete. The technique is easy and safe for the beginners. ये easy और safe है beginners के लिए. Lunging is the technique of an athlete bend his torso towards the finishing line. torso का part, आगे का chest part का जो है, okay, that is being used in the finishing line in the last stride. While doing so he touches the imaginary line. ऐसा वो इमेजिनरी लाइन ऐसे फिनिश इस तरीके से करते हैं। दिस टेक्निक इज़ एडोप्टेड बाय द एक्सपीरियंस और वेल वर्स्ड एथलीट। जो अच्छे एथलीट होते हैं वो ये टेक्निक का यूज़ करते हैं। देन शोल्डर श्रग्स, दिस टेक्निक ऑफ एन एथलीट, द रनर बेंड्स हिज वन शोल्डर सो दैट हिज टोर्सो कुड मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री नियर द फिनिशिंग लाइन. This complete action is performed in the last ride near the finishing line. This technique is usually used by the extraordinary और experienced athlete. जो extraordinary है और जो experienced athlete है वो क्या करेंगे, शोल्डर श्रग का यूज़ करेंगे. Now what is the medium race, distance race? So medium race में कौन कौन सी आ जाती है, 800 मीटर एंड 1500 मीटर are been included in medium distance race. अब standing start, अब what type of start is being given in the medium race? That is standing start. अब यहाँ पर आप लोगों को क्राउच स्टार्ट या सिटिंग स्टार्ट की ज़रूरत नहीं है. इन दिस मीडियम डिस्टेंस रेस द स्टैंडिंग स्टार्ट शुड बी टेकन बाय एन एथलीट बिकॉज सिटिंग स्टार्ट इज़ नॉट बेनिफिशियल इन दिस रेस. 800 मीटर में सिटिंग स्टार्ट या 1500 में सिटिंग स्टार्ट जो है वो बेनिफिशियल नहीं है, वो फ़ायदा नहीं करेगा बिकॉज दे नीड टू कवर द लॉन्ग डिस्टेंस एज कम्पेयर टू द शॉर्ट रेस. ओके, सो इन दिस रेस नो सिग्नल्स ऑफ सेट इज़ गिवन बाय द स्टार्टर. हम लोग वहाँ पे सिटिंग स्टार्ट में व्हाट द सिग्नल वाज बीन गिवन, ऑन योर मार्क सेट देन गन शॉट. बट हियर देयर इज नो सिग्नल फॉर द ऑफ द सेट इज बीन गिवन बाय द स्टार्टर. ही ओनली सेज ऑन योर मार्क देन एट द सिग्नल ऑफ ऑल द रनर टेक द स्टैंडिंग स्टांस बिहाइंड द रनिंग लाइन. इन द पोजिशन द फ्रंट लेग द रनर शुड बी बेंट फॉरवर्ड slightly and his body should be bent forward. The elbow should be bent, both the arms should be relaxed. At the time, the attention the runner should be at the flush of the gunshot, and then afterwards, on your mark and gunshot. There is no set because there is no sitting start. Then afterwards, we are having starting of the race. Starting ऐसे होगा, in the beginning some strides should be taken quickly. Okay. Then running techniques क्या होगा ये middle race में, the runner should run his race according to his practice. ओके, अदरवाइज व्हाट हैपन्स कि कोई और हमारे से आगे तेज भाग रहा है, व्हाट हैपन्स वी ऑल्सो यूज टू टेक अ लॉन्ग स्ट्राइड एंड वी ऑल्सो यूज टू रन फास्टर. देन आफ्टर फ्यू डिस्टेंस व्हाट हैपन्स, वी यूज टू गेट एग्जॉस्टेड वेरी सून एंड द पर्सन मे लीव द रेस ऑल्सो. सो इट इज़ बेटर दैट वी मे रन अकॉर्डिंग टू आवर कैपेसिटी. So that's why it has been given that there must be the runner should do his race according to his practice. He should keep his speed balanced. His arms action should be smooth and balanced. आर्म्स का जो मूवमेंट है मीडियम रेस में वो एक जैसा होना चाहिए, रिदमिक होना चाहिए. थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द रनिंग हिज बॉडी शुड बी रिलैक्स. ओके, अगर टेंस रहेगा तो क्या हो सकता है दैट देयर विल बी अ प्रॉब्लम वाइल रनिंग. नाउ फिनिश ऑफ द रेस. In the end part of the race, he should finish the race by run through his with full speed. Okay, जो finish जो race है वो क्या करेंगे, end part जो है वो full speed से भाग के पूरा करेंगे. That is either might be 100 last 100 meter or last 50 meters. Clear? Then we are having long distance race. Long distance race consists of 300 meter triple chase, 5000 meter, 10,000 meter, marathon, etc. are being included as a long distance race. Generally the same techniques are being used in the long distance race as middle race. Standing start से ही होगा, no crouch start is been given or no sitting start is given here. Clear? So this is from my side this much. आज थोड़ा हम इतना ही पढ़ेंगे. Okay, in the next we are going to learn some other race related like hurdles, okay, steeple chase and that all. So everyone, take care of yourself.
and maintain the notes. Okay, if you, it is better that you may prepare the notes on the basis of this.